Now, files. The very simplest version of file is the CSV file, comma separated file. Still, you can have a text file. CSV is also a text file. But JSON files is Java files, Java data files, and XML files is internet files or web pages files. So these files can also be loaded. And as all of you are familiar, we have downloaded the data from the web sources in the last lecture, and that data I think you practice in your assignment number 1, where you coronavirus data you have downloaded from a table in a web page. So this is not a file, this is a web page, this is something other. But these XML files, these are the codes, web codes. So by using the web code, we can have the data from the web code too. Now, database file, we can download the data from the database files. Azure file, which is a cloud-based service or is similar as the SQL Server, but is in a cloud. So you can have data stored in Microsoft SQL Server, or we can have the data stored on Azure cloud. We may have the data in the online services, SharePoint, Salesforce, Dynamics, Facebook. These data can also be downloaded into the Microsoft Power BI. So these are the several options. These options are summarized in this table: Excel file, CSV file, XML file. There is no need to remember and learn each and everything about these files, but some are very important. Like all of you should be familiar with the CSV file. You are familiar with the text files. And if your files are in folders, the entire content of the folders can also be downloaded. That is also a possibility available in the and JSON file. So there is no need to learn each and every file, but few of them are very important. Like I will demonstrate one segment of this lecture on Microsoft SQL Server. I think some of you are familiar with that and some of you are using that, but not all of you are familiar with that. But I will demonstrate it because I will, in the next lecture, I will implement the data warehouse lecture in Microsoft SQL Server. So you should be familiar with the Microsoft SQL Server. G, any query or any question if someone is have? आगे चलते हैं. Comma separated files may contains header row, a CSV extension, comma separated, and this option will be there. How many rows you want to extract? सर ऑप्शंस सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखती वो अच्छा, डेस्कटॉप से ठीक है. First 200 rows, either you have to pick the 200 rows from the CSV file, or you want to extract the entire data file, or do not detect the data type. Multiple options are there. This is the practice from a CSV file. Now extracting data from web, we did this practice last time. You have coronavirus file you have downloaded. So I'm skipping these 2 slides. This is the practice from a CSV file. So you have to click on the get data, then you have to click on the text CSV and then connect. This file is there, countries CSV, and you can see the names of the countries will be open. तो इज इट नेसेसरी कि मैं इसको रन करके दिखाऊं या मैं आगे इसको एज इट इज मूव कर दूं? इज ए क्वाइट सिंपल प्रोसेस. ये एक फोल्डर मैंने आपको डेटा का ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं वो दिखा देता हूं अभी आपको. यू कैन डाउनलोड ऑल द डेटा विच इज यूज्ड इन दिस कोर्स फ्रॉम द कोर्स पेज. Business intelligence, BI.
This is to download the data file of all labs. Click here. I think one complete folder contains all the data file related with the chapters. 23 chapters are there, but few of the chapters will be demonstrated in these 4 labs. So I am referring to which lab here. This is, I think, lab number 1. So you have to get data and you have to pick the CSV file, and then that CSV file name is countries.csv. And important points are what? Your file can be separated with colon. It is colon separated, not comma separated. This is also possible. Your file have a different types of separators, or comma separated, or equal times, semicolon, spaces, tab characters. Read the first 200 rows, or read the entire file, or no type detection. This was done last time. I'm not spending time on this. Microsoft Access database. This I am going to demonstrate here. If your file is in Microsoft Access database, so that entire data can be downloaded from this data file, client database.accdb. accdb is the extension of Microsoft Access data file. So these are the options. You have to click on different data source. I am going to select. So I am going to delete this from my Power BI desktop. So this data source has been eliminated. Now we have to get data. And from the get data, click on the Microsoft Access database, connect. And this database is stored into chapter number 2. So we have to refer to the chapter number 2 because it is in chapter number 2. This is the client database. So you can see a Access database and open. Now we have the 2 options. Two tables are there in the database. One is the client subquery and the client list. So if you want to download the both files, click the both. If you want to load or transform, in the transform, you will be in the query editor. Now I'm clicking on the load. Two tables are there, client list and client subquery. If I click on the client list, the data can be shown. This is the data. But some of the student may face difficulty in downloading the data from Microsoft Access. What that difficulty will be? That difficulty is this error, unable to connect. Because some of the versions have a 32-bit software, but some have 64-bit version.
So if you have a 32-bit machine, this file will not be open. So you have to uh, convert this by downloading a link, this link. Download this link and install into your computer, then you can open this data file. But in my computer, you can see it is directly downloaded because it's a 64-bit machine, and this data file is directly available to us. So this is the access database where from we can download the data. We can download the data from JSON files. I am not going to describe the JSON's file. This is the Java object files, and is a data format, is a Java data format. So we can download the data from this Java data file. We can load multiple files from a directory. If there are the multiple identical files, and you have to select connect. The folder dialog will appear. You have to browse and navigate to the folders and select the multiple identical files. Why these are the identical files? These are the identical files because we want to combine them. They must have the same structure, the same number of columns, and the column references are same. Suppose on column number 1 I have the ERP number in one column number 1, and in column number 2 I have the student name. So the same thing will appear into the another file uh, which contains seven columns, and all the columns should be relevant. These files will be combined, and merge file you can use for reporting purpose. So this is the loading procedure for multiple files. You can add your own data, or you can create your own file. So how you can create your own file? It's quite simple. In Microsoft Power BI, you have to this button. This is the enter data button. If you click the enter data button, a new table creation dialog box will be open. You can create the new columns here. Column number 1, you can type the data in column number 1. If you click on asterisk, another column will be added. So in this way, you can add the rows, you can add the column by just clicking these asterisks. And then you have to load this data. So you can type your data here by a new data file and then load this data file. So that is the way you can create your own file. Now, extracting data from the databases and data warehouse. The next segment. You can download the data from SQL Server. I have just skipped the few slides very quickly because I am interested to practice it using the SQL Server. So in the SQL Server, you can have the data into your SAP database, you have Oracle database, you have MySQL database, or you have a Teradata database. So there are the several options in database, but we are covering here some topics related with the SQL Server. So it's Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server.
And another one was what? This was MySQL database. MySQL. Can any one of you have idea about the differences in MS SQL Server and MySQL database? Do you have idea about these two? Hello? No one. No, No, sir, we sir. don't. It's a software that's used to, store databases and then we can query data from there. Right. These are both are the large database software, but this is from Microsoft vendor, and this is license based. But MySQL is a open source. So MySQL can be used. Most of the web developers are using nowadays MySQL database because MySQL is open source and you can use it very freely. So there is no copyright and no licensing issues in MySQL. But if you are formally using, informally, though we are using it, but if you are formally using the Microsoft SQL Server, so you should get a license because this is the server, and for server we have authentication and copyrights for that. So that is the main difference between the MySQL database and my MS. I'm practicing few things in the next few slides related with the Microsoft SQL Server trial version. The reason is Microsoft SQL is some of the big companies are using Microsoft SQL Server, but some companies are using Oracle databases nowadays. So I'm not going to describe the things related with the Microsoft SQL database, but no, I'm not going to describe the things related with the Oracle database. I'm going to describe some details about Microsoft SQL Server database. Now, how can you install the Microsoft SQL Server into your computer? This is basically the first phase where you are going to install the Microsoft SQL Server. And in the next phase, we will use this server for implementing a data warehouse. So in the next lecture, we will cover it. The one version is to download the software. The second version is implementing in the data warehouse. This is the next lecture detail. So how you have to install? I have a complete guideline here in these 2 or 3 slides. You have to download it yourself. But if you feel some errors or if you face some difficulties, so you can raise queries during by emails or by your CR Azhar. You can send queries and problems to me by through the CR. The first step is what the server is available. This is the tutorial which is available. The complete guide is available there. The steps are what? Install the SQL Server 2019 Developer Edition. The links are given. So you have to click on the link. You will be the page of the SQL Server download segments and then download the software and install. This is called SQL Server 2019 Developer Edition. But there are the several editions available, 2019, 2014, 2012. Several versions are available, but the latest one is 2019 Developer Edition. Developer edition is basically the edition which is freely available for development purposes. Means we are going to develop a data warehouse, we are going to demonstration purposes, we can use that. Second phase of installation is the Microsoft Server Management Studio. So these are the two separate applications, and individually you have to install both of them. What the Management Studio does, Management Studio will give you an interface to create the database, to run the queries, to
type the queries, to have the different tables, and how can these tables join among themselves. The data is stored in the server, but this is the console panel which you can use for the purpose of creating your tasks. So this is helpful for you if you are using the management studio. So your work will be quite simple. The third step is to connect to the server. After installing these two applications, then you have to connect to the server. After connecting to the server, you have to download a database. So I am demonstrating here as a sample database. How can I download the sample database? The links are given. Bike store database I will install here during the segment of the class and install it. After creating the database, you have to run the queries and create the objects. What are the objects in the database? Most important objects are the tables. So after creating the database, you have to create the tables. So SQL scripts are given. So you have not to learn these SQL scripts in very detailed and very formal way, but you can have idea by looking the commands into this script, what these commands are saying. So nothing is important. The name of the fields, the name of the tables, the name of the relations, the name of the entities, the name of the schemas, these are the major things that you should have to focus कि जी ये क्या होते हैं, इनका थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो जाता है तो आप आगे जा सकते हैं. Then to create a new database by creating objects and then loading data into your tables. So steps, and these are the 6 important steps. In the step number 1, you have to download the SQL Server Developer Edition if it is not available on your machine. If it is already available to your machine, so this step you can ignore. Step number 1. If Microsoft Management Studio, Server Management Studio is already installed there, you can skip this step. Now connect to the database. These are the live steps, and I will do it myself with you during the next slide. Any question related with this? If anyone have any query related with this, you can ask. SQL Server tutorial.net getting started. इस पे सब कुछ मिलेगा आपको. ये इंस्टॉलेशन का कैसे जाना है, एक एक करके स्टेप्स क्या होंगे, कौन कौन सी स्क्रीन्स आ रही होंगी आपके सामने, वो स्क्रीन्स भी शेयर की हुई हैं इस ट्यूटोरियल में. आप देखेंगे तो ये इंस्टॉलेशन के स्टेप्स हैं. तो मैं इंस्टॉलेशन को स्किप करके यहाँ से आगे जा रहा हूँ, क्योंकि इंस्टॉलेशन ना भी आपके पास इस वक्त रिसोर्स शायद हो. कुछ लोग लैपटॉप पे होंगे, कुछ डेस्कटॉप पे होंगे, हो सकता है कुछ जो हो वो मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट हुए हुए हों. तो बहरहाल अगर आप कहेंगे तो अगले उसमें या कि एक्स्ट्रा टाइम में मैं इसमें एक लाइव सेशन कर दूंगा जिसमें इंस्टॉलेशन अगर आपको डिफ़िकल्टली हो रही होगी तो आई विल guide you in the installation phase. From where you can download SQL Server 2019, this is the link. The server can be downloaded here, and developer edition, free developer edition you have to choose, because several instances will be there. Some of them are the paid versions, but some are the free version. So you have to choose this one, free developer edition, because you are using it for a demonstration purpose. If you are working for a company and you want to install this for your company, so you have to take license for that. Is a complete video guide during installation. If you face any difficulty, you can view this video. This video is not recorded by me, but this is one of the good tutorial for the purpose of installation. So you can see it. This is the view where you can download the file, developer edition, this one, which is red highlighted. So this is the file that is to be clicked for downloading the
Microsoft SQL Server. Then the next step is to download the Management Studio. The link is there. By clicking over this link, you can download Management Studio. Then connect to the server, and you have to download the bike store database. Bike store database can be downloaded from this link. So all the links are provided to you, and after downloading this zip file, you have to unzip this data file. In this data file, I am demonstrating the zip and unzip version of this file, so that you should be familiar कि ये इसमें क्या होगा और ये किस शक्ल की होगी ये. Microsoft SQL Server, this folder, and Azure setup. I'm not going to demonstrate the Azure setup here in this course. Last time I did that, but student face much difficulties in Azure setup. Is a live database. Load SQL Server sample database files. This is not the file. So bike store. This is the folder where when you download a zip file, this will be SQL Server sample database. It is a 100 KB file. You have to unzip the file. The 3 files will be extracted. The first one is a bike store sample database, create objects. Bike store sample database, drop objects, or bike store sample database, load data. So you have to run first one, and then you have to run the last one, because create the objects in which the tables are created, and then in the table you have to load the data. So you have, these are just 2 Microsoft SQL Server scripts. These are the SQL scripts. In these scripts, the file creation procedure and data loading procedure, procedure means the SQL commands are there, and you have just to copy these 2 scripts into your Microsoft SQL Server and then execute the SQL commands. Now I am switching to the presentation, and then I think in the next few slides we have to create the new database using the following scripts: bike sample data, create object, and then load data. ये आपको run करने हैं, create object और load object, load data. फिर इसके बाद मैं पावर BI में डेटा कैसे लाऊंगा बाइक स्टोर का, ये उसके बाद का फेज है ये. ठीक है, लेकिन यहाँ तक का भी मैं आपको दिखा रहा हूँ. आई एम मूविंग टू द SQL सर्वर, और वहाँ से फिर मैं ये डेटाबेस आपको क्रिएट करके भी दिखाऊंगा. इंस्टॉलेशन का फेज यानी स्टेप नंबर 2 तक का तो ये आप खुद करेंगे अब ये, और अगर इसमें डिफिकल्टी होगी तो मुझसे पूछ लेंगे आप. अदरवाइज डाउनलोड टू द बाइक स्टोर आपने खुद कर लिया होगा, मेरे पास डाउनलोडेड है, मैं वहाँ से डायरेक्ट आपको दिखा दूंगा यहाँ करके. तो आई एम स्विचिंग टू द SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो. Now you can see the screen of SQL Server Management Studio. ये आप टाइटल में देख सकते हैं, Microsoft SQL Server Management Studio. Is a simple new project, new file, new query with the current connection. Database engine, now the DAX, MDX queries. These are the different queries. But I'm most of the time, if you have to run a file, SQL file or a query, so you have to just click on the new query.
When you click on the new query, so these are the query. So this is called query editor. So if you run a query, if you to just first type the query there and run it by just clicking on the execute command. So this is the execute command that you suppose now I am going to close this database and refresh it so that you will see that how we can connect to the SQL server. To save changes to the following items, I'm just going to close this server instance. I don't want to save it. No. अच्छा, ये आपका क्लोज हो गया. Now I am going to open it again. How can I open it again? SQL Management Studio. Can you see it in your Explorer? Microsoft SQL Server Management Studio. No, sir. Okay. Actually, it is taking time to open. Sir, what's the difference between the developer edition and management studio? Management Studio is necessary. Management Studio is a control panel that will help you to develop table, to run queries, to have different objects to be linked together. तो ये मैनेजमेंट स्टूडियो का काम है. तो मैनेजमेंट स्टूडियो में और डेवलपर एडिशन में डाटा रखा हुआ डेवलपर एडिशन में होगा. डेटाबेस मेरा बनेगा वहां पीछे बैकएंड पर, वो डेटाबेस मेरी वहां होगी. लेकिन डेवलप मैनेजमेंट स्टूडियो विल हेल्प अस टू फैसिलिटेट दैट फाइल्स. तो ये थोड़ा सा फर्क है इसमें. और डेवलपर एडिशन और नॉन डेवलपर एडिशन में फर्क मैं बता चुका हूँ. डेवलपर एडिशन जो होते हैं उमन वो प्रोग्रामर्स यूज करते हैं, डेवलपमेंट कर रहे होते हैं वो. जैसे अभी हम कुछ काम कर रहे हैं ऐसे, तो ये डेटाबेस हम बना रहे हैं या डेटाबेस को हमें इसके अंदर कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ स्क्रिप्ट्स लिखनी है, तो ये डेवलपर एडिशन के अंदर हमें ये सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं. इसके साथ साथ फिर ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो जो है ना, वो डेवलपर एडिशन के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिसमें हम बहुत सारा डेवलपमेंट का काम वहाँ पर भी कर सकते हैं. तो ये इसमें मेन डिफरेंस है. लेकिन आप थोड़ा सा फर्क समझिए, दो वर्जन्स हैं, दो सॉफ्टवेयर हैं, दो सॉफ्टवेयर ना कहें तो दो एप्लीकेशंस कहें. एक माइक्रोसॉफ्ट सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो है, मैनेजमेंट स्टूडियो है, ये तो फ्रंट लेयर है. ये इस वक्त आपको शायद नज़र आ रही हो मेरी स्क्रीन पर. मैं दोबारा से शेयरिंग ऑप्शन चेंज करता हूँ, शायद आपको नज़र नहीं भी आ रही होगी तो अब आ जाएगी. ये क्या है? ये मैनेजमेंट स्टूडियो जो अभी नज़र आ रहा है आपको. लेकिन जब मैं डेटाबेस बनाऊंगा, वो सब स्टोर होगी, वो सब बेसिकली वो पीछे वाले सॉफ्टवेयर में होगी जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डेवलपर एडिशन. डेवलपर एडिशन तो उसका नाम है, लेकिन वो सीक्वल सर्वर का बेसिकली डेटाबेस सिस्टम है वो पूरा का पूरा. मैनेजमेंट स्टूडियो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की फ्रंट लेयर है, जिससे हम टेबल्स को क्रिएट करना और डाटा को मैनेज करना, डाटा को एडिट करना, ये फ्रंट एंड है जो सिर्फ और सिर्फ हमें फैसिलिटेट कर रहा है. लेकिन असल काम बट पीछे. ये टेबल्स को आप फिर भी एडिट तो कर सकते हैं मैनेजमेंट स्टूडियो से, आई बिलीव. जी कर सकते हैं हम. टेबल्स यहाँ मैनेजमेंट स्टूडियो से कर सकते हैं एडिट, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो स्टोर वहीं होगा जाके. ठीक है ना. बट वो एडिट करने के लिए आप ये बात बोल रहे हैं, वो एडिट करने के लिए आपको डेवलपर एडिशन होना जरूरी है, या फिर सिर्फ मैनेजमेंट स्टूडियो से भी ये काम हो सकता है? नहीं, सिर्फ मैनेजमेंट स्टूडियो. तो देखिए ना, मैं जैसे आप जो बात कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं आप कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड है, बैक एंड है ही नहीं. तो असल काम तो है ही बैक एंड का. सिर्फ फ्रंट एंड है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि सारा डेटा स्टोर हो रहा है वहां पर जाकर पीछे. तो इसलिए ये ना सब नहीं कि उसके बगैर हम कुछ कर लें, उसका होना जरूरी है. ठीक है, उसका बैक एंड का होना जरूरी है, वो नहीं होगा तो हम इस पर कुछ नहीं कर सकते.
राइट राइट, आई गेट इट। तो वो हमेशा पैकेज में ही इंस्टॉल होता है जी आपके पास, बिल्कुल, वो स्टेप वाइज भी मैनेजमेंट करें स्टूडियो आप ही, और उसको। वो पहले आप वो राइट स्टेप करें फिर दूसरा ही करें। हम मैनेजमेंट स्टूडियो के बगैर तो चल सकते हैं, लेकिन हम डेवलपर एडिशन के बगैर नहीं चल सकते, क्योंकि असल काम डेवलपर एडिशन ने करना है। मैनेजमेंट स्टूडियो तो सिर्फ और सिर्फ ये टूल्स हैं, फ्रंट एंड के टूल्स हैं जो फैसिनेटिंग हैं, ईजीनेस के लिए हैं, और ये आसान हो गए हमारे लिए। वरना अगर ये नहीं होता तो हम सारा का सारा एसक्यूएल में कर रहे होते काम। तो कोई जी हम जी, ऑफ ऐसे, कोर्स आई गेट हाँ इट। बिल्कुल, हम सिर्फ एसक्यूएल कमांड्स कहीं और जाके लिखते, वो रन कर देता वो तो यूँ समझें कि ये इंटरप्रेटर है जो हमसे कमांड्स को लेकर के और डेवलपर एडिशन के अंदर उनको इम्प्लीमेंट करके डेटा वहाँ क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। अच्छा, मेरे पास इस वक्त जो स्क्रीन नज़र आ रही है, ये एसक्यूएल सर्वर जो कनेक्शन का एक टर्म बार बार यूज हो रही थी, यू हैव टू कनेक्ट विद सर्वर। तो ये कनेक्ट टू द सर्वर जब आप करेंगे ये स्क्रीन आएगी, ये आफ्टर इंस्टॉलेशन आएगी। तो ये मैं मैनेजमेंट स्टूडियो के थ्रू वो जो डेवलपर एडिशन में मैंने सर्वर को डाउनलोड करके रन किया, चलाया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, उससे अब मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। ये इसके लिए मुझे पासवर्ड और लॉगिन चाहिए होगा। तो ये लॉगिन पासवर्ड आपको नज़र आ रहे हैं, या कनेक्ट का बटन में प्रेस करूँगा तो मैं इस सर्वर से कनेक्ट हो जाऊँगा। ये मैंने इंस्टॉल किया था, उसका नाम मैंने अपने पास सेव कर लिया था। मैं आपको स्टेप्स भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जब आप सर्वर की इंस्टॉलेशन करें तो वो पासवर्ड और वो भूल जाएंगे अगर आप, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये। तो मैं कुछ फाइल्स आपको दिखा रहा हूँ अभी, जहाँ पे आप इसको देख सकेंगे। इंस्टॉलेशन स्क्रीनशॉट्स के नाम से मैंने ये सेव किया है फाइल, मैं इसको अभी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये इंस्टॉलेशन स्क्रीनशॉट्स है, जो मैंने पासवर्ड रखे हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। ये सर्वर नेम, ये रहा सर्वर नेम, डेस्कटॉप, दिस ये इंस्टॉलेशन के वक्त मुझे वो उसने बाय डिफ़ॉल्ट शो किया था, मैंने चेंज नहीं किया, एज इट इज़ रखा है। अगर मैं चेंज कर देता तो जो नाम मैं चेंज करके लाया था वो आया था। यूज़र नेम में मैंने ऐसे, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था, मैंने वही छोड़ दिया था, और इसके बाद पासवर्ड मैंने अपना रखा, और ये आपके पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई यहाँ। तो कम टू द पॉइंट कि जी हम सर्वर पे वापस आ रहे हैं, और सर्वर की स्क्रीन्स को ये कनेक्ट का बटन मैंने प्रेस किया। रिमेंबर पासवर्ड हुआ है ऑलरेडी, तो मुझे बार बार ये, वरना बड़ा प्रॉब्लम होती है अगर आप पासवर्ड भूल गए तो सर्वर में बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं। अब ये देखें आपके पास ये सर्वर के जो वो हैं ऑब्जेक्ट्स हैं, ये नज़र आ रहे हैं। दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है डेटाबेसेस। इस वक्त कितने डेटाबेसेस नज़र आ रहे हैं आपको? इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, ये एडवेंचर वर्क के नाम से एक नज़र आ रहा है, एडवेंचर वर्क डेटा वेयर हाउस के नाम से एक नज़र आ रहा है, और ये बाइक स्टोर के नाम से नज़र आ रहा है। तो आई एम डिलीटिंग द बाइक स्टोर डेटाबेस, ये अब आपके सामने इंस्टॉल करूँगा मैं इसको। तो ये मैंने यहाँ से इस पर राइट क्लिक किया, और ये डिलीट का बटन मैंने प्रेस किया। ये बाइक स्टोर का डेटाबेस जो है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये मैंने ओके कर दिया, ये यहाँ से रिमूव हो गया। एडवेंचर वर्क को अगर मैंने रिमूव करना है तो ये भी मैं कर दूंगा, क्योंकि ये मैंने आपको नेक्स्ट टाइम डिमॉन्स्ट्रेट कराना है एडवेंचर वर्क। ये भी मैंने डिलीट कर दिया। एडवेंचर वर्क का ये डेटाबेस था, और वो एडवेंचर वर्क का डेटा वेयर हाउस था। तो डेटाबेस भी यही है, आप देख रहे हैं क्या, डेटाबेस भी यही है, डेटा वेयर हाउस भी यही है, क्योंकि डेटा वेयर हाउस इज नॉट मोर देन अ डेटाबेस। वो भी एक डेटाबेस है, बस सिर्फ उसमें मैंने डायमेंशनल मॉडलिंग की हुई है, उसमें मैंने स्ट्रक्चर्स को चेंज किया हुआ है, और उसको मैंने दूसरी फीजिबिलिटी के साथ स्टोर किया हुआ है। और डेटाबेस में भी डेटा है, लेकिन डेटा वेयर हाउस में वो डेटा अलग से ले हैं। आज के लेक्चर में हम उसका सेकंड सेगमेंट में इंशाल्लाह उसको डिटेल में कवर करेंगे। नाउ कम टू द create database option. So how can I create database? So I have to run few scripts that I show you previously by create object. You can see these two. So now create object, this is the file that I have to run. File, new query. This is a new query file.
तो वन ऑप्शन इज कि मैं उसको ओपन करूं क्वेरी को, तो यू कैन सी माई नोटपैड फाइल। जब मैंने उस पर क्लिक किया ना, ये नोटपैड फाइल में खुल गई वो। ये वो स्क्रिप्ट्स हैं जो कि क्रिएट के लिए आएंगी। तो क्रिएट टेबल्स आप देख रहे हैं, इसमें कमांड्स क्या हैं। ये इस वक्त सिंपली प्लेन टेक्स्ट फाइल है, बाइक स्टोर सैम्पल डेटाबेस क्रिएट ऑब्जेक्ट नोटपैड में खुली हुई है इस वक्त। उसमें कुछ ऊपर बाइक स्टोर्स का नाम है और कुछ डिटेल्स आ रही हैं। क्रिएट स्कीमा, स्कीमा का नाम दिया हुआ प्रोडक्शन एंड गो। ये गो से स्कीमा, क्रिएट स्कीमा सेल्स, ये स्कीमा क्रिएट हो रहे हैं और स्कीमा के बाद फिर टेबल्स क्रिएट हो रहे हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट बड़े डेटाबेसेस हैं ना, उसमें पहले स्कीमा आते हैं और स्कीमा के अंदर फिर टेबल्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें दो स्कीमा क्रिएट हुए हुए हैं, एक का नाम है प्रोडक्शन और एक का नाम है, बिल्कुल इसको स्कीमा को आप यूं समझिए कि आप जैसे कहते हैं कि जी आपको बनानी तो फाइल्स हैं, ठीक है। अब फाइल्स को, लेकिन आप बहुत सारी फाइलें जब हो जाती हैं तो आप फिर उन फाइल्स के लिए एक फोल्डर बना देते हैं। तो ये क्या है, फोल्डर है जिसमें बहुत सारी फाइल्स बंद हो गई हैं। और फिर जब बहुत सारे फोल्डर्स हो जाते हैं तो फिर आप एक ड्राइव बना देते हैं जिसमें सारी की सारी, ये बड़े लेवल्स हैं सिर्फ और सिर्फ। तो इसमें जो स्मॉलर लेवल है वो टेबल है, और टेबल से बहुत सारे टेबल्स अगर मेरे पास बने हुए हैं तो मैं एक स्कीमा बना लेता हूँ। उस स्कीमा का नाम मैंने रख दिया सेल्स। तो सेल्स से रेलेवेंट जितने टेबल्स हैं वो मैंने सेल्स स्कीमा में रख दिए, और प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी टेबल्स होंगे वो मैं प्रोडक्शन स्कीमा में रख दूंगा। तो एक प्रोडक्शन के अंदर हो सकता है वो 10 टेबल्स हों जो प्रोडक्शन से रेलेवेंट हों। प्रोडक्शन से मशीन, कौन कौन सी मशीनों से प्रोडक्शन आ रही है, और सेल्स से रेलेवेंट कौन कौन से सेल्समैन हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। इसके अगर अलग अलग टेबल्स बने हुए हैं तो सारे टेबल्स मैं इस स्कीमा में रख लूँगा। अब ये क्रिएट टेबल की कमांड्स दी हैं। तो वी हैव नॉट टू बी वेरी स्पेसिफिक। अब उसमें टेबल के अंदर क्या है, फील्ड्स हैं। तो आप देख रहे हैं फील्ड्स कैसे आ रही हैं, टेबल्स के अंदर फील्ड्स हैं, डेटा नहीं है अभी। डेटा वहाँ से जब मैं लोड डेटा करूँगा जब आएगा। ये अभी फील्ड नज़र आ रही है आपको, कैटेगरी आईडी इज़ द फर्स्ट फील्ड। Field means a column into a table. This is a table. Name of the table is categories. This will be under the production schema. तो आप देख रहे हैं इसको लिखना कैसे होगा, प्रोडक्शन डॉट कैटेगरीज। और क्रिएट टेबल आपको समझ में ही आ रहा है। तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू टेबल, द नेम ऑफ द टेबल इज कैटेगरीज एंड दिस टेबल विल बी क्रिएटेड अंडर द स्कीमा प्रोडक्शन, and it contains two fields. One is the category ID and category name. The category ID is an integer field and category name is a varchar. Varchar का मतलब है variable character 255. Not null का मतलब है इसमें हम null values नहीं डाल सकते, खाली छोड़ के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें ये लाजमी फिल करना है। और प्राइमरी की है ये, इसमें डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये प्राइमरी की है। इस तरह से आप ये सब पढ़ लें, मैं इतनी डिटेल्स में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक में अलग अलग नंबर ऑफ फील्ड्स हैं, हर एक में नंबर अलग अलग वो हैं। मेरा काम अब सिर्फ क्या है इसमें, मेरा काम अब ये है मैं ये चीज़ें यहाँ से उठाऊँ, एरेज करूँ पहले तो इसको। अब मैं आप देखें आपके सामने कर रहा हूँ, यहाँ से कंट्रोल ए किया मैंने, कंट्रोल सी किया, और मैं वापस वहाँ गया सर्वर में। सर्वर में मैंने ये एक एसक्यूएल कमांड खोली हुई है, आपके सामने इस वक्त नज़र आ रही है। अब मैं ये यहाँ पेस्ट कर दूँ इसको, ये पेस्ट हो गई यहाँ। अब आप देख रहे हैं वहाँ ये किसी थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल, वहाँ प्योर टेक्स्ट में नज़र आ रही थी, लेकिन हेयर इट हैज़ सम बोल्ड कैरेक्टर्स एंड सम इंडेंटेशन एंड प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। तो ये ज़्यादा है क्योंकि ये इसको समझता है इस सारी चीज़ को। नोटपैड नहीं समझता, वो तो सिर्फ टेक्स्ट समझ रहा है, जैसे आपने किसी को लेटर लिख दिया कोई, लेकिन ये इसको समझता है क्या है। अब हाउ टू एग्जीक्यूट दिस टू क्रिएट दिस डेटाबेस, तो जस्ट एग्जीक्यूट बटन, this is the execute button. You have to click this execute button. This entire script will be executed and run. Command completed successfully, completion time this, and what happened under the database.
tables are not created. अच्छा, एरर भी कोई नहीं आया. अगर एरर आता तो यहाँ से हमें वो एरर आइडेंटिफाई कर देता कि ये एरर है. Okay, I am following some steps. You can come with me with the link that is provided in this file, which you have to go through for creating new objects. This is the link for Management Studio. This is the link for create a new database bike store using the following script. Another thing that you can do is to create a new database in SQL Server. That link can be file, new, no, from here. From here you can click new database. Here, new database. Now here are the files which we can attach MDF file. I'm changing to the file which is representing the steps of installation of this database.
These are the steps. Load the SQL Server sample file after downloading. I'm just clicking on the step number 5. Now bike store, this file is creating object. So I have decompressed these 3 files. Bike store sample database, bike store drop all objects. New database, in the new database, you have to write down the name of the database, the bike store. Click OK. Okay, so the same screen with the help of new database. So I have to G Azhar. सर मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ सर्वर 2019, ये एरर दे रहा है कि प्रोसेसर इज नॉट कंपैटिबल i5 है। आपका i5 है? हाँ 32 बिट है लेकिन 32 बिट है ये आपका। तो हम्म, ये 32 बिट वर्जन और 64 बिट वर्जन के डिफरेंस की वजह से तो नहीं हो रहा है? नहीं वो मैंने चेक कर लिया, मैंने 32 वाली डाउनलोड की थी मैंने। अच्छा, आपने 32 वाली की थी। चलें, इसको मैं चेक करता हूँ। अभी मैं ये डेटाबेस की क्रिएशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर दूँ तो फिर मैं आपके इस क्वेश्चन की तरफ वापस आता हूँ कि भाई ये कैसे आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। ये सर्वर में यही फाइल थी जहाँ से हम जा रहे थे और न्यू डेटाबेस में आपको स्विच करना है। न्यू शेयर, नाउ क्रिएट डेटाबेस, न्यू डेटाबेस, बाइक स्टोर। सर आपको शेयरिंग चेंज करनी पड़ेगी, हमारे पास वो सब विंडो जो आ रही है वो नहीं आ रही। 1 मिनट में करता हूँ। अब नजर आ रही है? यस सर। ओके। वाकई वापस रखोगे? चल चल चले, मैं इसको चेक करता हूँ। आप लोग कैसा करें, 10 मिनट का ब्रेक कर लें। इसमें कुछ स्क्रिप्ट के अंदर प्रॉब्लम है, वो मैं थोड़ी देर में चेक करके, इतनी देर में आप नमाज़ पढ़ लें ईशा की, तो दोबारा से कनेक्ट करते हैं आफ्टर 15 मिनट्स, ठीक है?
मीनवाइल ये मैं चेक कर लेता हूँ कि ये एरर क्यों आ रहा है इसके अंदर. Can I start? Yes, sir. Okay. Okay, the code was that you have to first create the database. So just right click on the database and the new database. Here you have to write down the name of the new database, bike store. This is the third version of the bike store I am creating, the bike store 3. Instead of writing the name bike store, I am using the name bike store 3. Click OK. A new file is open and you have a bike store 3 database here. In this bike store 3, now we have to create the tables. For creating the table, we have to open the query. So now these are the different queries which are already open here, but we have to run another query in this bike store 3. That query can be creating by just click on the bike store 3 link and then file, open file and the script create object, connect. Now the script is now open. Can you see the script? This is the same script that I was showing you in the notepad. Here you have to click the execute button. You are facing this error. This error is due to the file is already exists. That is why this error is here. But you can see the database tables in bike store. Yeah, bike stores. So these are the tables that will be created by the help of this query. Now the tables are created. In these tables, the data is not there. You have to click on the next script, load data. So I am deleting some of the files from the system. The reason is these files are not needed. These files are created double or triple here. So now in tables, we have all of these, and I am going to run another script, and that script is load data script. Database engine, SQL authentication, and connect.
bike store. Now run this script. Object bike stores does not exist. Reason is bike stores. The name of the file I have to change because the name by which I created the file is the bike underscore stores. So I am going to change this here, bike underscore score, and all of the words are in lowercase. So I have to rename this by small letters. Now success. Rows are added and you can see the data by one more script. File new, file. New query with the current connection here. Suppose I want to see the data into any table, like the table production.brand. Select star from table name is production.brands. Production dot brands. So this is the command that you should have to execute for all the records into the brand table. You can see here brand ID 1, Electra, brand ID 2, Harrow, and so on. So this is the way of working in SQL Server. Now I have to take some questions from you. If you are having difficulty in all of these steps, I can repeat for you. G participants. Any query or any question? सर आई थिंक आप एक दफा अगर शुरू से समराइज करके बता दें, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, ठीक है, ठीक है, आई एम रिपीटिंग. देखिए, इन स्टेप नंबर 1 you have to install SQL Server. So you have to install SQL Server. SQL Server. Then you have to install Management Studio. After Management Studio, you have to create a new database. After creating the database, you have to run the script for creating object. Creating objects. What objects are to be created? Tables and relations, that is. Then you have to load data. Load data and run query to see the data. सर ये स्क्रिप्ट्स कहाँ से रन करी थी? स्क्रिप्ट रन करने के लिए आप सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन द फाइल,
new query with the current connection. So a new query file will be open, and you have to type the SQL commands here. Okay? Any SQL command. The simplest command is select star. Star means all rows of that table. From which table? From the name of the table. The name of the tables are shown here. So you can see the name of the table on the left side, production dot categories. अभी मैंने आपको production dot brands show किया था, अब production dot categories. तो I have to write down the name here, production dot, but you have to be specific with the spelling, production dot categories. After typing this command, a semicolon should be there, and click on the execute button. So you can see the category ID, children bicycle, and ID 2 is comfort bicycle, number 3 is this, number 4, and so on. So all of the data inside this table is shown. Suppose I am interested to open sales stores or sales customers, the customer table. Sales dot customer means sales is the name of a schema and customers is the name of table. So I am just going to change the same query. I am editing this. This is sales dot customers and run. So now all the data inside the customer table is shown. Is this okay to all of you? ठीक है, रिपीट कर दिए स्टेप्स मैंने. SQL सर्वर डाउनलोड कर रहे हैं, इसको रन कर लें या इंस्टॉल कर लें, मैनेजमेंट स्टूडियो को एग्जीक्यूट कर लें, इंस्टॉल कर लें, डाटाबेस क्रिएट कर लें और फिर उस डाटाबेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लें. उसके लिए स्क्रिप्ट्स गिवन है. जिसके स्क्रिप्ट्स गिवन हैं वो ये हैं. Scripts are already given to you for creating object. This script is given to you. And the script for the data loading is given to you. These two scripts are given to you. So just open that script. Is a big script. In this script, all the table names with the all schemas are there. Data is not created by the first script. The first script just create table. The first script just create schemas. What the second table did, second query create the rows into the relevant tables. तो इसमें डेटा गिवन है सारा. वो बस जैसे मैं लोड की क्वेरी रन करता हूँ तो वो सारा का सारा डाटा पॉपुलेट हो जाता है डेटाबेस के अंदर. और अब मेरा डेटाबेस कंप्लीट है यहाँ पे. अब इससे अगले स्टेप पे मैं जंप करने जा रहा हूँ और इससे अगला स्टेप है extract data into Power BI. That is the next step. कि ये जो मैं अभी डेटा यहाँ देख रहा हूँ ना SQL सर्वर में, ये तो मैं इस वक्त समझ लें डेटा स्टोर पे या डेटाबेस पे खड़ा हूँ. अब मैं अगर इसकी रिपोर्ट्स बनानी है मुझे, तो मैं रिपोर्ट्स तो पावर BI में बनाऊंगा या टैबल्यू में बनाऊंगा. तो आई हैव टू extract this data from SQL Server into the Microsoft Power BI. Now, these are the steps. Now, these are the steps. You have to open a new Power BI file, then click Get Data and select SQL Server.
and name of the database you have to enter, and import button. The data will be loaded. Data will be loaded. So I'm Sir, are you just showing another sorry. screen? We can't see the screen on which you are performing the steps. Okay. These are the steps. Yes. Connecting with the SQL Server in a new Power BI application. Why new Power BI application? Because the previous data sources should be closed before going to open the next one. Then click on the get data button. After get data, you have to click the application from where you want to get the data, that is SQL Server. Then you have to enter the name of the server that is already saved by you. So you have to write down the same name of the server and name of the database. These two items you have to provide before opening the data file. Finally, you have to click on the import button. So I am just clicking these one by one, these steps into Microsoft Power BI so that I will connect with my database and want to take data from that list. Now, another file is already open in the Microsoft Power BI. I am just closing that. To right click on the client table and delete. So now client table is deleted and there is no data after completing that here. Subquery, one more table is here. I have to delete that too. Now no data is here. Now click on the get data button, SQL Server. SQL Server. This is. Here we have to type the name of server. So my server name is, this is the server name. Server name. I am just copying the server name from the Word file where I have already saved that. Now I have to type the name of the database here, but this name will be exactly same as that I have created into the server. And that name is the bike underscore stores. This name is the name of the bike underscore stores. Exact name should be there. Here we have the two options. The first option is the import option, and the second option is the direct query. What is the difference between these two? The major difference is in the import, a snapshot of the database will be imported here in Power BI, and the two databases will then be disconnected. वो सारा डेटा का एक स्नैपशॉट यहाँ आ जाएगा पावर बीआई में. फिर जो माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर का डेटाबेस है और यहाँ का डेटाबेस है, ये बिल्कुल डिसजॉइंट होंगे. अब मैं जो कुछ भी वर्किंग पावर बीआई में करता रहूँगा, इट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इनटू द माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर. और सीक्वल सर्वर में डेटाबेस में जो भी अमेंडमेंट्स अपडेट्स होते रहेंगे वो मुझे पावर बीआई में नजर नहीं आएंगे until unless I re-import that. But the another option is the direct query. In the direct query option, there is a connection built with the Microsoft SQL Server, and if it is the refreshing lively, then every time if someone change the data into the SQL Server, that will be automatically be reflected into my Power BI query reports. So this is the one of the wonderful option in the live queries. तो लेकिन ये इसमें डेटा हर वक्त मुझे कनेक्टेड रहना पड़ेगा. I must have to be connected with the SQL Server every time to run the direct queries. So these are the two important options. ये decision आपको करना है खुद कि भाई आपने direct query या import करना है. अभी मैं import दिखा रहा हूँ आपको. In the advanced option, I have the further details.
Here I can run the command, SQL commands. Whatever commands that I was executing in SQL Server, I can write down the command here. Suppose from the bike store, I want to select only a specific table, not all tables. I want to select from the bike store. So that specific table selection criteria and the SQL command of that should be typed here and click OK. So I want to open all tables from that store. So just I'm clicking on OK. Now these are the tables. Production.brand, categories, products, stock. So there are how many schemas there are? Can you tell me the name of schemas? Sir, two, production and sales. Yes, production schema is the first schema. In the production schema, I have 1, 2, 3, 4 tables. And in the sales schema, I have 5 tables. So these are the two. I want to connect with all of these tables. If I want to connect to all of these tables, select the relevant table and load. If you want to transform the data, click the next one. So right now I am just loading the data, not transforming it at the instance. Now all the data is here, and now you can click on a specific table and data view. It is taking time. You can see the table data. If I am changing the table name, the next table will be there. And right now you can create the report by any table or by the mixture of these tables, by the mixture of these fields. Suppose I want to see the graph of product ID and the list price. Product ID and the list price. This is Sir, it. I have a Yes. in case new data is added into the table, does it reflect in Power BI automatically, or do we have to refresh the database? Neither you can refresh the database nor it automatically be reflected here, because I chosen the option of load data. Direct query was not chosen by me at that time. If you download the data file with the direct query, then it is an option. Okay, the data someone is editing into the SQL server will be reflected here. Either it will be reflected here directly immediately, or it will be reflected by just pressing this refresh button. Lekin right now, it is not the option that I chosen at the time of loading data from the SQL server. Is this okay? Yeah. तो आप उस वक्त वो चूज कर लें डायरेक्ट क्वेरी को. इफ यू चूज डायरेक्ट क्वेरी तो फिर ये रिफ्रेश का बटन आप प्रेस करेंगे यहाँ से, तो वहाँ जो चेंजेस आएंगे वो मैं करके दिखाऊंगा अभी. तो वो डेटा यहाँ आपको रिफ्लेक्शन में उसके नज़र आ रहा होगा वो. ठीक है, तो ये एक पार्ट ये कंप्लीट हो गया जिसमें हमने ये क्रिएट किया, इंपोर्ट बटन किया और उसके बाद डेटा लोड किया. उसके बाद ये ऑप्शंस आ गए. दिस डेटा इज शोन हियर.
Acha, another option is server name database SQL statement. You can type the SQL statement there. Which you want to execute. तो अभी तो मैंने सारा डेटा वहां से पिक कर लिया, लेकिन अगर मैं सिलेक्टेड डेटा कुछ लेना चाहता हूँ, आई वांट टू choose the selected tables and selected data from these selected tables, तो वो भी हो सकता है. उसके लिए मुझे वो कमांड जो मैं माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर में टाइप कर रहा था, SQL कमांड, वो मैं उस तरह की कमांड्स यहाँ पे टाइप कर देता. वो ऑप्शन मैंने दिखाया था लोड के वक्त कि दैट ऑप्शन इज अवेलेबल. आई एम अगेन शोइंग दैट ऑप्शन SQL सर्वर, एंड दिस इज द ऑप्शन इंपोर्ट एंड डायरेक्ट क्वेरी. इंपोर्ट में डिस्कनेक्टेड हो गया, अभी इंपोर्ट कर लिया, स्नैपशॉट है. स्नैपशॉट के मीन्स क्या है कि ये डेटा की एक कॉपी यहाँ मुझे मिल गई है. अब मैं कोई चेंजेस करूंगा वो SQL सर्वर में इट नॉट बी रिफ्लेक्टेड. SQL सर्वर में समवन इज अपडेटिंग डेटा देयर इज नॉट बी शोन हियर इन पावर BI, तो डिस्कनेक्टेड है ये. डायरेक्ट क्वेरी में ये ऑप्शन है कि वो मेरा कनेक्शन बिल्ट होगा, तो स्नैपशॉट नहीं आएगा मेरे पास. डेटा पावर BI में डेटा नहीं रहेगा, डेटा SQL सर्वर में ही रहेगा. मैं जो कुछ भी रिफ्लेक्शंस करूंगा वो यहाँ पे मेरे पास वहाँ से डेटा आता रहेगा. मेरी ये जो रिपोर्ट्स होंगी ये इमीडिएट डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होंगी. तो वहाँ प्रोडक्शन लेवल चेंज हो रहा होगा, तो यहाँ मेरे पास ग्राफिक्स में और रिपोर्ट्स में वो प्रोडक्शन लेवल इमीडिएटली अपडेट हो रहा होगा. तो ये डायरेक्ट क्वेरी का ऑप्शन है. और ये जो एडवांस का ऑप्शन मैंने दिखाया था, यहाँ आप पूरी कमांड टाइप कर सकते हैं. जैसे मैंने वहाँ लिखा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. Firstly, you have to type the schema name dot table name and a semicolon. Exactly the same query command that I was typing there in SQL Server is to be write down here and click OK. So then only the data which fulfill this query will be downloaded. Only the data table relevant with this query will be downloaded here, not all tables. So this is another option that you can perform. And then one slide is there which is representing SQL Server, bike store, and command. SQL command is there, sales.order. If you type this command in the window, this window, sales.order from bike stores, so you will get the data from all data into the order table of the sales schema. This is the end of chapter 3. Now I have to switch to the next chapter. This is direct query connection live, chapter number 4. So I'm just skipping this in a quick way because what are the advantages of direct query and what are the limitations of direct query? You can read this slide. How direct query different from the load data. ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं इस पर टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा. ये स्टेप्स स्लाइड नजर नहीं आ रही है. ओके, आई एम सॉरी, वो हर दफा मुझे चेंज करनी पड़ती है. ठीक है, ये स्टेप्स हैं. व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड डिफरेंसेस ऑफ द लोड एंड डायरेक्ट क्वेरी. तो ये आप रीड कर लीजिएगा, इसकी लिमिटेशंस हैं. ये इसके वही स्टेप्स हैं जो मैंने बताए थे, बस इसमें हमने डायरेक्ट क्वेरी को रन कर दिया इसमें और एक कमांड दे दी SQL सर्वर सेल्स टेबल की, ऑर्डर टेबल की सॉरी, और मैंने लोड किया या ट्रांसफॉर्म किया तो मेरे पास डेटा इस टेबल का मुझे रिफ्लेक्ट करेगा और ये लाइव डेटा होगा. लेकिन ये लाइव डेटा वहाँ से जब तक रहेगा तो लाइव रहेगा. अगर मेरा कनेक्शन बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, जैसे वो डेटाबेस मैंने क्लोज कर दी या कुछ कर दिया, तो ये फिर पावर BI से डिस्कनेक्शन हो जाएगा ये, और फिर पावर BI में कोई उसका इंस्टेंस डेटा नहीं होगा. जब तक वो दोबारा लाइव नहीं करूँगा, until unless I cannot see the next data or that data. तो ये डायरेक्ट क्वेरी में यहाँ करके थोड़ा सा दिखा रहा हूँ. अभी टाइम नो डाउट अभी काफ़ी हो गया, 8 o'clock यहीं हो गया. मुझे अभी डेटा वेयर हाउस का भी पूरा करना है कंप्लीट, और जो आज मुझे लैब 2 स्टार्ट करनी थी वो तो अभी शुरू ही नहीं हुई लैब 2. तो इट मीन्स पेंडिंग, वी आर गोइंग टू द पेंडिंग वर्क. तो देखना पड़ेगा, अगर एक आध लेक्चर एक्स्ट्रा देना पड़ा तो यू शुड बी मेंटली प्रीपेयर्ड फॉर दैट कि जी एक आध लेक्चर की कहीं ज़रूरत पड़ेगी अगर तो मैं करूँगा फिर.
Acha, right now what I want to show here is the direct query, or can I skip this direct query? You can do it yourself. या कर दूं? सर कर दें ताकि वो हेल्प हो जाए थोड़ी पढ़ते चलो हैं। ठीक है, मैं ये कर रहा हूँ इसको. In Power BI, I am just closing this instance. Don't save data. I have closed all the connection, and a new Power BI is open. सर अगर आप स्क्रीन शेयर कर दे रेदर देन विंडो तो स्विचिंग से जो लैग आता है हमें बचत हो जाएगी उससे फिर. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मेरे पास वो स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं आता. आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे पास, आपको बल्कि शायद नज़र ना आ रहा हो, मेरे पास सिर्फ वाइट बोर्ड आता है और स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं आता. तो मुझे, मैंने ये क्वेरी डाली हुई है IBA को कि मुझे ये डिफ़िकल्टी होती है, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं होती. वरना उसमें मुझे पता है वो बड़ा फ़ायदा होता है, जैसे स्क्रीन चेंज करते हैं वहाँ ऑटोमेटिकली स्टूडेंट को रिफ्लेक्ट करती है वो. नाउ कमिंग टू द गेट डेटा बटन, and click on SQL Server, database, connect. Type the name of server and the name of database, bike underscore था या dash था, underscore stores, and click on the direct query button and advanced option. And what was the SQL command? Select star from season. So I'm not going to write down the SQL command. I am just going to load all the data from the database. Now all tables are shown here. Load. The data is there. Acha, you can see here we have only two options. What two options? One option is the option of report. Second option is the diagram option. So you can see the relationship diagram here. So this is the relationship diagram. So how the tables are interconnected to each other. And one option is missing in the direct query mode, and that option is the data view option. So I cannot view directly the data here in the form of tables, but in the form of visuals, I can see that. Suppose I am going to represent this card or this table. You can also represent the data with the table. This is the table and this is a card. So now I want to sell this production stock tables. What fields are there? Quantity and product ID. Product ID. I don't want to show the product ID here. In the table, I want to show the product ID and quantity. Acha, in table, in card, I want to represent the overall quantity. The overall quantity is 14,000. And I want to change the unit. Instead of 14K, exact figure is not showing. So I have to change it. Data labels. In general, what we have options.
title, background, border, shade, tooltips, visual. I have to change one property by which I can see the exact value instead of these thousands of values. That is to be searched. Okay, meanwhile, I want to change some data in this table in SQL Server. What I want to change? Quantity. Product product 1 having quantity 55, product 2 having quantity 45, and so on. So if in one product, if I change the quantity in Microsoft SQL Server, so that change should be reflected here after pressing this refresh button. अभी मैं करूंगा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी तो वो रिफ्रेश कर रहा है, देखें, लेकिन मैंने वहां कोई चेंज ही नहीं की है, तो ये एज इट इज नजर आ रहा है सब कुछ. लेकिन in product number 1 I want to change 50, instead of 55 I want to change that quantity to the 75. So I'm going to the SQL Server. In the SQL Server, I have to write down a query, and that query is the update query. Because if you want to change the data, so you have to type an update query. Okay, I'm showing you the commands for update query. SQL Server update statement. All the statements or SQL commands with this tutorial you can have. Update, this is the update option. You have to write down the command update in capital letter because the commands are to be written into the capital letter. The name of the table which you want to update, that you have to write down. Then set. तो ये जो वो क्वेश्चन था एक स्टूडेंट का कि सर हम डेटा कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए मैं डेटा चेंज करने जा रहा हूँ SQL सर्वर में और फिर उसका Sir, we रिफ्लेक्शन can't see the screen. मैंने तो अभी शेयर की थी, चलिए मैं दोबारा करता हूँ. Resume. Is it can be? Yes, sir. Okay. Update table name, set column name is equal to expression name. Expression is basically you can have the value, direct value, or you can have any formula here in the form of expression. Now in column number 2, what change do you want? The expression number 2. Where clause is optional. What the where clause does, where clause is represent the rows on which these changes are to be occurred. जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था कि वहां पे मुझे करना ये है प्रोडक्ट आईडी 1 में 55 की जगह 65 कर देना है, तो मैं यहाँ where में लिखूंगा कि प्रोडक्ट आईडी is equal to 1. If the product ID is equal to 1 will be shown into the command, then the change will be occurred only in ID product having ID 1. All the remaining products will not reflect this change. तो मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसी कमांड को जो अभी यहाँ नजर आ रही है, जो है नो डाउट कि ये भी फॉर्मेट है, लेकिन मैं इसको कॉपी करके वहाँ सर्वर पे ले जा रहा हूँ क्वेरी में. तो मैं फिर स्क्रीन चेंज करूंगा और अगर मैं नहीं होती है कहीं तो आप मुझे याद दिला देते हैं, अच्छा है कि मुझे पता चल जाता है. अच्छा ये आपको यहाँ नजर आ रहा है SQL. अब मैंने ये जो अभी सेलेक्ट स्टार वाली कमांड दी हुई थी इसी को मैं थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूँ, या मैं नई क्वेरी एक और बिल्ड कर देता हूँ. फाइल न्यू क्वेरी विद द करंट कनेक्शन, और ये जो मैं वहाँ से सेलेक्ट कमांड अपडेट कमांड ली थी मैंने, आई एम जस्ट राइटिंग द अपडेट कमांड हियर. आई हैव टू राइट डाउन द कॉलम इन विच द चेंजेस आर नीडेड.
तो वो मैं टेबल वहां से दिखा के जो विजुअल्स मैंने वहां क्रिएट किए थे पावर बीआई में, उन्हीं विजुअल्स में मैं चेंजेस करूंगा। तो इसलिए मैं कॉलम नेम वेयर में जो आएगा वो तो प्रोडक्ट आईडी आएगा, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। और चेंज चाहिए मुझे किसमें, क्वांटिटी में। तो क्वांटिटी विल बी, क्वांटिटी इज इक्वल टू 65 कर दूंगा वहां, तो ये 55 के बजाय 65 हो जाएगी। और प्रोडक्ट आईडी में मैं 1 रखूंगा। और टेबल का नाम आप याद रखिए किस टेबल में से मैंने ये लिया है, प्रोडक्शन डॉट स्टॉक्स टेबल, ये याद रखना है। तो प्रोडक्शन डॉट स्टॉक्स टेबल, name of the field that I want to update is quantity, and the row number 1 I want to change row number 1. तो column name is quantity is equal to, the value is 55 तो already था, I want to get it at 65, 10 level to be increased. I am removing the rest of the column because they are no more needed. तो स्क्रीन चेंज कर दे। Oh, I'm sorry. Set quantity is equal to 65. Column 2, I don't want to change any other column, so I am removing this part. Delete. Acha. The next thing is to be changed is what? Where. In the where clause, we have to put the condition. What the condition is? Condition is product ID equal 1. So I have to write down here product underscore ID is equal to 1. Is this correct command, or can you suggest any change if it is not correct? सर टेबल का नेम नहीं आएगा? Yes, I have to write down the name of the table. Yes, I have to change it. The name of the table. What was the name of the table? मैं यहाँ क्या पावर बीआई में देख रहा हूँ. The name of the table was production stock table. Production stock table. So I have to change the name of the table, production dot stock table. Is this correct now, or further changes are needed? Further changes are needed. One change that should be is to remove these brackets. Why? Because these brackets are shown in that format, indicating that the where clause is optional. We can skip that. So if I am using it, to remove these two brackets. So production dot stocks आएगा table name. ऐसा है, stocks है. Yes. Okay. One error आया था. अच्छा, one more thing is to be required, and that is to remove this comma, because this comma is used if I have to set multiple columns. I don't want to change the multiple column. Only one column is required to remove this comma. I am trying to execute this command. सर आपने कॉलम के लिए स्पेसेस दिए लेकिन रॉ के लिए स्पेसेस नहीं दी, इज इक्वल्स टू पहले और ये ऑप्शनल है, इसलिए ऑप्शनल है, दे सकते हैं नहीं भी दे सकते, इसकी इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. ठीक है, ये इसको रीड कर लेगा. कलेक्टिव भी मैं दोनों में से चाहे रिमूव कर दूं, चाहूं तो ये स्पेस रख दूं. नाउ क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन. 3 rows affected. 3 rows affected means what? ये में एक रो में नहीं हुआ, ये 65. इसका मतलब है ID 1 की वहां
कहीं 3 रोज हैं, उनकी वो समरी मुझे शो कर रहा है। तो अब आपको वहाँ पे आप देखिएगा क्या चेंजेस पावर बीआई में नज़र आएंगी, वो मैं वहाँ से शो कर रहा हूँ। तो आई एम जस्ट चेंजिंग द स्क्रीन एंड इन पावर बीआई no changes there. What should I do? Refresh, sir. Refresh button. Now it is 195 because it was occurring 3 times and these changes were done in all of the fields. So the new figures is there. And if I have exact figure of that card, so this change will also be reflected because this number is indicating the total of this 13651, that is rounded to the 14k, but it is exactly as 13,651. So I have to change the unit system of this. So I am going to search unit. Oh, very good. Display units auto. If it is none, you can see it. Now it is very, very clear. Now units, display unit, I changed the display unit. I was searching the name of the property that I should change. 13,651. If I run that query again in SQL Server with some other figures, with some other values, in SQL Server, instead of 65, I am choosing at 165 in product ID 1 and executing this query again. And it's success. And now moving to the Power BI and refresh button. 13,651 was the total. Now it is 13,951 will be the new total. And it becomes 495. But you were feeling that why every time we have to press the refresh button? Is there any way without pressing the refresh button, the changes will automatically be reflected here? So the answer is yes. तो ये अब आप इसमें अगर सर्च करेंगे तो आपको वो कुछ प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी जिससे कुछ सेटिंग्स आपको करनी पड़ेगी. विद द हेल्प ऑफ दैट सेटिंग्स ये जो रिफ्रेश है ना, ये ऑटोमेटिक, अभी ये इस वक्त मैनुअल रिफ्रेश पे सेट हुआ हुआ है सॉफ्टवेयर. तो इफ आई चेंज द बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर विद द ऑटोमेटिक रिफ्रेश, तो मुझे बगैर क्लिक किए वहां जैसी चेंज करूंगा यहाँ रिफ्लेक्शन नजर आएगी उसकी. तो ये लाइव क्वेरी है और ये आप समझ रहे हैं मेरे ही कंप्यूटर पे दोनों हैं इसलिए हो रहा है ऐसा आपके जहन में नहीं आना चाहिए. अगर ये डेटाबेस सीक्वल सर्वर वाली आपने अपने कंप्यूटर पे बनाई हुई होती और मैं पावर बीआई में आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हुआ होता डायरेक्ट उसमें, तो आप चेंजेस करते मुझे यहाँ डेस्कटॉप पे इसमें नजर आती पावर बीआई में. तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिससे मैं लाइव डेटा, तो देखें आजकल के ज़माने में यही हो रहा होता है कि आपकी जो प्रोडक्शन यूनिट है, continuously the items are producing. This number is a total quantity produced. So the manager of the company is watching this figure. Every moment in the cell phone of the manager, this figure is there. वो हर वक्त देख रहा है कितनी प्रोडक्शन हो गई, वो लाइव नजर आ रहा है उसको वहां से. तो इज वन ऑफ द बेटर ऑप्शन कि जी आप लाइव चीज़ों को देख सकते हैं.
सेल्स हो रही है तो आपका सेल्स मैनेजर देख सकता है कि टोटल सेल कितनी हुई, एवरी टाइम द न्यू फिगर विल बी शोन देयर। तो ये ऑप्शन अच्छे ऑप्शन हैं ये, लेकिन क्लाउड पे हम सारा कुछ कर सकते हैं। अभी तो हम पावर बी आई डेस्कटॉप पे हैं। इफ वी आर मूविंग टू द पावर बी आई क्लाउड, तो दैट ऑप्शन विल बी more options we will have in that. Any question, or I have to switch to the next part of this lecture, that is the lecture of data warehouse. अब आप बताएंगे, ये तो या तो मैं अभी इसी को कंटिन्यू कर लूं पावर बीआई को, और वो मैं किसी और दिन 1 घंटे का लेक्चर ले लूं, क्योंकि ये भी ज़ाहिर है इम्पोर्टेंट ऑप्शन है जो अभी रन हो रहे हैं यहाँ पे। और फिर वो एक ऑप्शन हम उसका फिर बाद में एक दिन कर लेंगे, सीक्वेंस हमारा ब्रेक होगा यहाँ पे जाके। तो क्या कहते हैं आप लोगों का, क्या ओपिनियन है? सर हम लोग ये एसक्यूएल और दूसरा सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लेंगे, अभी वो इंस्टॉल नहीं किया हुआ हमने। ओके ठीक है, चलें, ये ज़्यादा बेटर है कि जी आप कर लेंगे, तो फिर मैं डाटा वेयर हाउस उसी वक्त डायरेक्ट रन करके दिखा दूंगा आपको कि वो कैसे रन होगा और किस तरह से उसके फाइल्स बनेंगे, ये सारे के सारे। तो आप लोग मीनवाइल ये कर लें, एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड कर लें, और ये जो सैम्पल डेटा बेसिस दिखाई थी इसकी प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, ये लैब्स जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, दीज लैब्स आर बेसिकली द असाइनमेंट्स। तो ये आप सारा खुद करें, जो मैंने यहाँ किया है, जितना मैंने कर लिया है ये आप खुद कर लें एक दफ़ा। आपके पास .pbix फाइल्स बन जाएंगी, और ये 4 टैब्स मैं खोलूँगा 4 लैब्स के LMS पर। आप मीनवाइल जो जैसे ऐसे ऐसे कंप्लीट करते जाएंगे, ये चारों असाइनमेंट्स आप उस पर अपलोड कर दें। तो अभी हमारे पास ये चल रहा है लैब 1 का सेगमेंट चल रहा है, ये भी मैंने लैब 1 भी कंप्लीट नहीं किया है, लैब 1 डेटा लोडिंग लेक्चर। और ये भी मैं शॉर्ट वर्जन करके दिखा रहा हूँ आपको, यानी एक्चुअल जो मेरे पास वर्जन था इसका वो बहुत लेंदी था, लेकिन मैंने उसको काफ़ी रिड्यूस किया है। लेकिन जो कि टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है इसमें टाइम लग जाता है ज़्यादा। वो हम प्लान ये करते हैं कि जी हम कम टाइम में कर लेंगे उसको, लेकिन इट टेक्स टाइम, क्योंकि टेक्नोलॉजी में कहीं पे एरर, जैसे एरर आ गया था वो डेटाबेस क्रिएशन के वक्त, तो 10-15-20 मिनट उसके अंदर वेस्ट हो गए वहाँ पे। बहरहाल ये सब चीज़ें हैं, पार्ट होता है, दिस इज़ द लेकिन ये कि अब मैं फिर ये करता हूँ कि जो पावर बीआई के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शंस हैं उसकी प्रेजेंटेशन को रन करता हूँ। ये मैं पहले इस प्रेजेंटेशन में देख लूँ हाउ मेनी स्लाइड्स आर रिमेनिंग। डायरेक्ट कनेक्ट चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया, और चैप्टर 5 में क्लाउड से डेटा आएगा ज़ेयोर से। इस चैप्टर 5 को तो मैं इग्नोर कर दूंगा, तो आप लोग देख लें अभी ये जो प्रेजेंटेशन आपको नज़र आ रही है, इसका चैप्टर 5 जो है ये डायरेक्ट connection to be built with the Azure, Microsoft Azure। तो अगर आप करना चाहते हैं और हिम्मत है तो मैं इस पे आइडियाज़ दे दूंगा आपको, Azure पे कनेक्ट कैसे बिल्ट होगा। लेकिन ये सारा चूँकि क्लाउड बेस्ड है और ट्रायल वर्जन्स पे काम हो सकता है, लाइसेंस वर्जन तो अवेलेबल नहीं है, या फिर लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा, तो वो तो एक मुश्किल काम है। हम तो सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ में जा रहे हैं, अभी ट्रायल पे जा सकते हैं हम। तो व्हाट योर ओपिनियन इज, यू वांट टू वर्क विद Azure और आई कैन स्किप दैट? आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ये आप बता सकते हैं मुझे कि Azure में इंटरेस्ट है या नहीं है। जी, यस नो में जवाब दे दें, डोंट बी हेसिटेट। Azure अगर कर लें तो अच्छा है। अच्छा, Azure में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? यू कैन रेज योर हैंड, जितने इंटरेस्टेड हैं, जितने नहीं हैं वो छोड़ दें। क्योंकि हम ये भी कर सकते हैं, देखिए सेपरेट टाइम में भी इंगेजमेंट हम कर सकते हैं। मेहदी, ज़रा, मरियम जब्बार, ठीक है। थोड़ा सा वो टेक्नोलॉजिकली और टेक्निकली थोड़ा ज़्यादा उसमें हमें एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, लेकिन बहरहाल हम करा देंगे इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में। और हो सकता है अगर हम ओवरऑल क्लास में ना कराएं तो हम एक सेशन 1 आवर का कंडक्ट कर लेंगे। In that session, students have option whether to join or not. तो इस पार्ट को मैं कंपलसरी नहीं कर रहा 5वें वाले को, जो 5th वन है, ये डेटा डाउनलोडिंग फ्रॉम Azure। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट है आपका इसमें, जिन लोगों का भी, वो इसको कंप्लीट करें और आगे सबमिट कर दें। तो
तो ये 5 चैप्टर्स की एक लैब थी. दिस इज लैब नंबर 1 and all of you have to complete this lab onto your machines and their .pbix files for each chapter, because these are 5 chapters. The 4 chapters are mandatory to submit. तो वो LMS पे जब वो टैब ओपन होगा उस पर आप ये फाइलें 4 फाइलें एटलीस्ट 4 फाइल्स, बिकॉज इफ सम ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन Azure तो यू कैन सबमिट दैट. वो अच्छा है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आई एम हैप्पी फॉर दैट कि जी आपका इंटरेस्ट है इसके अंदर. अच्छा 5-7 मिनट का ब्रेक ले लूँ मैं, थोड़ा सा काफ़ी मुझे इस वक्त थकन का एहसास है और कंटिन्यूसली से बोलना होता है, इज़ डिफ़िकल्ट टास्क. लेकिन ये कि 10 मिनट के बाद फिर दोबारा आगे कंटिन्यू करते हैं. हो सकता है फिर हम 9:30 तक आगे चले जाएंगे. क्विज फिर आज नहीं होगा, क्विज फिर हम नाउ कमिंग टू द Power BI directly. Now you can see the Power BI, and I want to close this PBIX and want to open a new PBIX. Don't want to save it. A new instance of Power BI is going to open. And get data. I want to get data from chapter number 6. And this is a chapter number 6, example 1 dot pbix file. Example 1 dot pbix file. Can you see the screen of Power BI? Yes, sir. Okay. Example 1 from chapter number 6 is open. Now, to enter into the query editor, you have to click on this button. So after loading the data, if you want to switch to the query editor, to click this option. Transform data or data source setting. I want to transform data. Sir, where can we get that data file from? From my website, all the chapters data files are provided to you over there. So you can download the all chapters into your computer, and I am moving to the chapter number 6. And this file is from chapter number 6. But an error is there. The reason of error is actually the files are in C colon, but my file is not in C colon. My file is column. This is car sale data. It is in F colon. So I refresh that.
Now you can see the data. Is this okay up to you? Up to now? अभी तक हमने देखें कुछ नहीं किया, सिर्फ डॉट चैप्टर 6 की पावर बीआई की फाइल ओपन की और वहाँ से हम फिर क्वेरी एडिटर में आ गए। क्वेरी एडिटर में कैसे आते हैं ये भी मैंने बताया था आपको कि हम क्वेरी एडिटर में दो तरीक़ों से आ सकते हैं। एक तो जब वो लोड डेटा करते हैं, लोड और ट्रांसफॉर्म के दो बटन नज़र आ रहे होते हैं, तो यू हैव टू क्लिक, इफ़ यू क्लिक ऑन द लोड बटन तो फिर आप डेटा मोड में आ जाते हैं, क्वेरी एडिटर में नहीं आते। और अगर आप वहाँ से ट्रांसफॉर्म का बटन पे क्लिक करेंगे तो आप उसमें आ जाएंगे। तो देखें अभी इस वक्त मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ, ये देखें एक विंडो ये नज़र आ रही है आपको, यहाँ से मैं ये ट्रांसफॉर्म का बटन नज़र आ रहा है, ये क्लिक करूँगा तो मैं फिर वापस क्वेरी एडिटर में आ जाऊँगा। ये क्वेरी एडिटर आ गया। क्वेरी एडिटर आपको शो नहीं होता है, वो अभी शो हो रहा होगा आपको ये, ठीक है। अब मैं क्वेरीज लिखने जा रहा हूँ आपको। देखें सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन तो ये है, at any time you can duplicate the query. This is query, the name of the query is database, the name of the table is also the base data, the name of the query is the base data. So I can change anything in this query editor and click this button, close and apply or close only. If I press only close only, then what is changed during this segment will not be reflected into my data. तो ये मुझे जो है ना, ये यहाँ से मैं स्विच करूँगा, ये तो मैं इसको क्लोज एंड अप्लाई करूँ या सारे खाली क्लोज कर दूँ। तो क्लोज होगा तो ये बंद हो जाएगा, सेव नहीं होगा, यानी इट विल नॉट रिफ्लेक्ट एनी चेंज व्हाट आई डिड हियर इन द क्वेरी एडिटर। तो क्वेरी एडिटर में आप कर क्या सकते हैं ये देखें। अब आप क्वेरी एडिटर के ये जो ऑप्शंस हैं ये मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। एंटर डेटा, एंटर डेटा में आप जैसे ही आएंगे तो आप देखें यहाँ से एक नया कॉलम आ गया। ये दीज कॉलम्स आर, you can add these columns, you can add these rows, and you can change the name of this table. The same name, a new query will appear here. Suppose I am writing this name as a new table, so a query will appear with the new table here. So now I have the two queries. These are not the two tables, these are here, these are be treated as the two queries. One query is the new table and other is the base data. Base data and new table, these are the two queries. But new data has nothing because I did not change the name of the column, I did not enter any rows here. तो ये कुछ भी नहीं किया मैंने वहाँ पे, वो मुझे वहीं पे कर सकता था मैं. If I change the name of the column, just right click here and rename. You have to rename it as like your ERP number. You have to rename it like rename your name of the student and so on, and close and apply. Now you can see the two tables here in new window. Base data and new table. You can see the new table here. I am not in query editor right now. I am in the data view, and this table can also be represented here in the data view because it doesn't have any row. And this is the table base data. But if I click on the next table, it has only 5 columns with no data is there. So I can delete this because this table is useless for me. And now only the base data we have here. Again, I am switching to the query editor.
transform, and few of the commands I want to show here. Refresh. Next option is manage. What is in manage queries? We have a label here, query, and manage query. Delete. You can delete the query from here. You can duplicate the query. The entire query will be duplicated. Now we have the two queries. One is this, other is this. This is an important option because if I want to change something into my data, then do not change into the original table. Change into a new duplicated table so that original data is saved. Now I want to change something into is this new query. Suppose I want to delete the this column. Is this okay? I want to change anything. Suppose I want to change the option that you can see here, promoted headers. What is the meaning of promoted header? The meaning is these headers will be in the row number 1, but they are promoted as a column title. I am removing it, promoted header. If I am removing the promoted header, then what happens? Is dealer will becomes a row. Invoice date, the column title will becomes a row. So I want to replace it again to use first row as header. Click this option. Use first row as header. Your first row will be promoted to the now promoted headers. This is the option. You can revert this option by cross button. Acha, more options are what here in advanced editor. Here we have properties of the query, but we can choose any column. Go to the column, choose any column. Not very important option. Remove any column. Remove other column. Remove this column or remove other column. It is very dangerous. If I click the remove other column, so this will retain into the table and all the rest of the column will be deleted. This option is very important. Keep top rows. Suppose I want to keep only top 100 rows, to just click this. Insert step. Or you want to insert a step, inserting an intermediate step may affect the subsequent steps, and this insert. How many rows I want to keep first 10 rows only. The remaining rows will be deleted from this query. So that is why I make a duplicate of the entire query so that if I want to delete some rows, the actual data is there. Okay. The only 10 rows I have. But I want to revert this action to remove this. Yes. This action was reverted. Now, if you want to keep bottom rows, if you want to keep range of rows, suppose I want to keep row number 100 up to 200. Click OK. Now only the 100 rows are there, row number 101, and this is row number. Only these are the 100 rows that we have. If I want to revert this action, keep range of rows, I reverted it. So this is a very important option, keep rows, remove rows, keep duplicates. Keep duplicates. If I click in the country column and pressing this keep duplicates, you can see what happened.
Duplicates rows, no action is there. Duplicate rows are kept. Remove duplicate rows is then another option. Keep errors. Only those records. अच्छा, keep duplicate से कोई बता सकता है क्या एक्शन हुआ होगा इसमें? सिंगल एंट्रीज उड़ गई होंगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा। वो कंट्रीज जो जिनके सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉर्ड होगा इसमें, वो इसमें से रिमूव हो गए होंगे। तो मैं ये जो कीप डुप्लीकेट्स वाला है ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। अभी मैं देखता हूँ, देखें अभी कितनी रोज हैं, 457 रोज हैं। अगर इसमें कोई डुप्लीकेट्स सिंगल आउट हुए होंगे या कोई एलिमिनेट हुए होंगे तो मेरे इसको रिवर्ट करने से ये नंबर बढ़ जाना चाहिए। और अगर ये 457 ही रहता है तो द मीनिंग इज कि जी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है एवरी कंट्री हैज़ अ मल्टीपल इफेक्ट्स और मल्टीपल टाइम्स वी हैव हियर। तो इसलिए सब में ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे अगर कोई है जहाँ पे सिंगल वैल्यूज होंगी तो उन पे ये एक्ट करेगा, अदरवाइज ये। अच्छा, इससे एक और ऑप्शन भी था, कीप एरर्स। इससे क्या होगा, सिर्फ वो फाइल वो रिकॉर्ड्स रिटेन करेंगे इन विच वी हैव सम एरर्स। ठीक है, एरर्स क्या होते हैं? एरर वो जो आ गया 1/0 इन्फिनिटी आ गया, या और कोई एरर हो गया, टाइप एरर हो गया, डेटा टाइप एरर हो गया, डेटा ट्रंकेशन एरर हो गया, या अगर जिनमें एरर्स होंगे जिन रोज में वो रह जाएंगी। इससे फायदा क्या होता है, इससे हमें सिर्फ वो रोज नजर आ रही होंगी जिनमें एरर है, so that we can modify these rows, we can modify these rows कि जी हमारे पास सिर्फ अब वही हैं जो करेक्ट डेटा है वो अलग हो गया है और वो रोज हैं, और फिर बाद में हम हटा दें इसको। ये जैसे मैं वापस चेंज टाइप को हटा दूं अगर, तो वो चेंज टाइप का ऑप्शन खत्म हो गया। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन, द सेम ऑप्शंस वी हैव हियर विद द रिमूव। वहां कीप का था, ये रिमूव का है। ये वो सारे वही ऑप्शन है, आई एम नॉट रिपीटिंग दीज ऑप्शन हियर। बाकी इसके आगे आप सॉर्ट के ऑप्शन नजर आ रहे हैं, A to Z, Z to A, और उसके बराबर में आपको कॉलम स्प्लिट का ऑप्शन नजर आ रहा है। तो आई वांट टू शो द कॉलम स्प्लिट हियर। I want to split this column. Column name is United Kingdom. And United Kingdom. Other names are the single names. Only the United Kingdom. So I want to split United and Kingdom into two columns. United will be in the separate column and the Kingdom will be in the other column. So you have to choose this split column by delimiter. Which delimiter I want to use? Split by space. We may have any other splitter. Suppose if colon is there, comma is there, but my splitter is space splitter. Acha, which delimiter you want to use? Leftmost, rightmost, each occurrence. Each occurrence, if I have, suppose in a country I have 4 spaces, then the one country name will be splitted into the 4 columns because every space will split that column. I am just clicking the leftmost. Okay. So now you can see country name United in a separate column and Kingdom in the another column. France. France is not splitted because it is a single name. The other field will be null automatically be. Now you can change the action and revert the action. Now you can see the action is reverted. Split column. United Kingdom is now in one column. Split column by number of characters is another important option. Suppose I want to split the columns 4 characters or 5 characters. The number of characters 5 characters repeatedly is a very important option. Repeatedly means after every 5 characters the column will be splitted. So it will be split into the multiple columns.
नहीं हुआ। कंट्री नेम, या तो मैंने कोई सिलेक्ट गलत किया हुआ था, क्या था वजह? चलिए मैं इसमें से स्प्लिट कर लेते हैं इनवॉइस नंबर को, क्योंकि इनवॉइस नंबर में आई हैव हाइफन्स, तो आई वांट टू स्प्लिट दिस फाइल बाय एवरी हाइफन। तो बाय एवरी हाइफन आई वांट टू स्प्लिट दैट। तो स्प्लिट कॉलम बाय डिलिमीटर, and the delimiter is hyphen, comma, equal, semicolon, space, tab, custom. In the custom, you have to type hyphen, not underscore. Every occurrence, yes, every occurrence. So now invoice number 1, invoice number 2, invoice number 3, invoice number 4, invoice number 5. The one column is bifurcated among the 5 columns. After every hyphen, it break the data. I am reverting it. Split column by position, split column by lower to upper. By lower to upper means, suppose we have north, west. तो ये लोअर, ये अपर में है, ये लोअर में है, तो लोअर टू अपर में यहीं से स्प्लिट कर देगा ये इसको, अपर टू लोअर में, अपर टू लोअर में। तो ये मैं चेक करता हूँ, देखें, स्प्लिट कॉलम लोअर टू अपर और अपर टू लोअर, तो आई एम यूजिंग अपर टू लोअर। तो अब आप देखें ये क्या हुआ है, ये अपर टू लोअर पे स्प्लिट आ गई, कई स्प्लिट्स आई हैं ये, लेकिन जहाँ लोअर आ गया वहाँ से वो स्प्लिट हो गया फिर। तो दीज आर वेरी पावरफुल एक्शंस इन डाटा मॉडलिंग बाय डिजिट टू नॉन डिजिट। जैसे ये इसमें नज़र आ रहा है इनवाइस नंबर में, डिजिट टू नॉन डिजिट, ये मैं चाह रहा ये हूँ कि डिजिट्स अलग हो जाएं और ये अल्फ़ाबेट्स अलग हो जाएं, तो मैं डिजिट टू नॉन डिजिट पे स्प्लिट लगा दूँ, तो वो अल्फ़ाबेट्स अलग हो जाएंगे और डिजिट्स अलग हो जाएंगे। लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये उस जगहों के लिए मीनिंगफुल है, जैसे आप एड्रेस लिखते हैं A56, तो मैं चाहता हूँ A अलग कॉलम में चला जाए, 56 अलग कॉलम में चला जाए, तो मैं डिजिट टू कैरेक्टर टू डिजिट का ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा नॉन डिजिट टू डिजिट, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बाय पोजीशन, बाय डेलिमीटर, बाय कैरेक्टर, बाय अपर केस, लोअर केस, आप कर सकते हैं। अच्छा, इससे बेटर ऑप्शन ये है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय, सपोज आई हैव UK is a one country, UK, and cost price or sale price. So I want to see a query in which all the UK entries will be accumulated with respect to the sale price. इन सब की सेल प्राइस जो यूके में, मैं उनका सम या उनका एवरेज या उनका कुछ निकालना चाहता हूँ, तो दैट कैन बी डन बाय द ग्रुप बाय ऑप्शन। तो ग्रुप बाय, कॉलम नेम, country name, count rows or sum of rows, average of, median, mean, minimum, maximum, count distinct rows, all rows. So I am interested in sum of what? Sum of cost price. You can see what happened. Now all the entries in the cost price column against the country UK are accumulated. यूके की वहाँ पे सेवरल एंट्रीज थी, हंड्रेड्स ऑफ एंट्रीज थी यूके की, और उनमें जितनी भी कॉस्ट प्राइस थी उन सब का टोटल निकल के यहाँ आ गया। इस तरह से ये बाकी आ गया आपके पास। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसको डुप्लीकेट कर लें, ये आप अपने पास रखें। इसको डुप्लीकेट किया मैंने, अब मेरे पास 2 सेट्स बन गए, ये एक में मैंने लेकिन ये कंट्रीज का ग्रुप बनाया हुआ है। अब मैं एक और ग्रुप बनाना चाहता हूँ, सपोज आई वॉन्ट टू ग्रुप बाय कॉस्ट प्राइस। Instead of sale price, I want to have a
group by the cost price. So now come to the country name and the group by option. You can change the name of the group. The new column name is cost price by country. And I am interested in sum or average or median, whatever function you want to apply. And I want to do it for the cost price or total discount or any other numeric field. Achha, these functions, sum, average, minimum, maximum, these can be done only for the numeric field, but sum of rows, count number of rows, this can be done for numeric or alphabetic both. तो ये कुछ limitations हैं जो आपको वैसे ही समझ में आती हैं कि ये क्या limitations हैं ये. तो I am just clicking on the cost price button. So now you can see in this query I have cost price. So I am going to change, this is the sale price. So I am changing the name of the column. Rename sale price. सर ये तो एक तरह से बस मैट्रिक्स ही बन गया जो हमने पहली क्लास में सीखा था. नहीं, ये मैट्रिक्स तो बन गया, लेकिन ये क्वेरी का रिफ्लेक्शन आएगा, वहां एक नया टेबल क्रिएट हो जाएगा. अभी मैं इसको करूंगा अगर, तो ग्रुप की वजह से जब मैं क्लोज करके वहां जाऊंगा वापस, तो एक नया टेबल क्रिएट हो जाएगा. इन दैट टेबल आई हैव ओनली द 2 कॉलम्स. वन कॉलम इज दिस एंड अदर कॉलम इज दिस. So in visual, I have table, that is an entirely different thing. A complete separate table will be there is a very important thing. So ये इसमें ये difference है basically. Now sale price sum by country, and I want to close and apply. Now, 3 tables are here. One is the base data, another is the base data 2. If I click on the base data 2, you can see the table. And if I want to see... So we can't see the screen. Okay. Is this okay? Yes, sir. Yes, yes. Base data 2 is the sale price by country, and base data 3 is the sale price, cost price by country. These are the 2 additional table now I have. और ये वो पुराना टेबल अपनी जगह मौजूद था. अब आप विजुअल्स में चले जाएंगे तो वो आप कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं ये, लेकिन यहाँ टेबल विजुअल्स में होगा, वहाँ टेबल एज ए सेपरेट डेटाबेस टेबल के तौर पर एक्ट कर रहा है. तो इसमें ज़्यादा पावर है कि आपने एक पूरा टेबल जनरेट कर लिया बाय सम. नाउ मूविंग टू द ट्रांसफॉर्म बटन अगेन, ट्रांसफॉर्म डेटा. आई विल बी अगेन इन द क्वेरी एडिटर एंड ये मैंने भी आपको पहले ही बता दिया है. यूज फर्स्ट रो एज हेडर, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं. और इससे आगे चले जाएं, मर्ज क्वेरीज और अपेंड क्वेरीज. दीज आर द 2 अदर ऑप्शंस. मर्ज क्वेरीज में वी कैन मर्ज द 2 टेबल्स. सर नजर नहीं आ रहा. अच्छा सर स्क्रीन चेंज नहीं हुई हमारे लिए. ओके. इन द मर्ज क्वेरीज वी हैव टू join the 2 tables by columns. Or merge queries as new, after merging a new query will be generated. So you can use these 2 options for merging the tables. Achha, in the transform option, the first 2 are the same as previously described. So I am describing the remaining few of them. I am defining here. Otherwise, the rest will be given you as assignment number 2.
suppose I have some option which is replace values. Replace values is one option and fill values is another option. So I want to demonstrate these two options, but these two options are there in a specific data file जो मैं भी आपको यहाँ शो कर देता हूँ. उसकी वजह ये है कि उसमें वो जो fill का ऑप्शन है वहाँ पे प्रॉपरली कवर हो जाएगा. Fill down. So it is chapter 7 example 1.pbix, and in this pbix we have a car make and model matrix. So I am going to switch to the another file to open, and that file is chapter 7 example 1.pbix. In this file, I have to get the data from car make and model matrix. Now I have added one sheet. You can see the sheet by clicking here. It's taking time to connect with the Excel file. This is sheet 1. Acha, in this sheet, some of the records are blank. You can see this is Aston Martin and the remaining is same, is blank, meaning that all these blank lists have Aston Martin there. So how can I fill that? So then query editor, transform data, and use this fill option. Fill. Acha, fill. Okay. Fill option up or down. If I use down, then Aston Martin will be filled in all of these rows. If I used up option, then Bentley will be filled in all of these these. So it's totally depend on the perception कि जी ये Aston Martin ही है जो नीचे भी आ रहा है और ये Bentley भी है जो नीचे आ रहा है. So I think more appropriate is down.
जस्ट क्लिक डाउन। तो जैसे ही आपने डाउन किया ये सब वेस्टर्न मार्टन यहाँ तक आ गए, बेंटले ये सब बेंटले आ गए एंड सो ऑन। तो ये फिल का ऑप्शन इज एन इम्पॉर्टेंट ऑप्शन इफ यू हैव सम रोज which are blank and you want to fill the data by. Pivot will be described in the next class because it takes time. Pivot and pivot, these two options I will demonstrate in the next class. What we have in move, left, right, beginning to end. The move what? Any column. Columns can be moved. Split column अभी मैं पहले ही समझा चुका हूँ आपको। और बाकी हम यहाँ से इसको पाइथन की क्वेरीज और आर की क्वेरीज रन कर सकते हैं। ये दो ऑप्शंस हैं। यहाँ से हम स्टेटिस्टिकल फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, काउंट वैल्यूज, सम वैल्यूज। चूँकि ये तो न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक पे अगर मैं क्लिक करूँगा आप देखिएगा फिर ये ऑप्शंस आपके ज़्यादा क्लियर है। ये सम, मिनिमम, मैक्सिमम एंड सो ऑन। सपोज आई वांट टू टेक अ सम, calculate sum, that sum is reflected here, sum of the entire column will be here, but that sum entire table will be changed by the sum. So before going to calculate the sum, either I have to duplicate the table and then calculate the sum in this column. This option. Now the sum is there, but the entire sheet is preserved and the sum is in another. Such type of calculated values are known as measure. So what is the difference between a measure and a column and a table? The measure is one value that can be calculated by based on all values in a column. That is a single value. जैसे अभी वो आ रही थी एक single value, total sum आ रहा था उसका, तो उसको मैं अब नेक्स्ट क्लास में डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। मैंने जितने ऑप्शन दिखा दिए आज यहीं पे रोकते हैं इसको। ये अज़्योर की लर्निंग आपको यहाँ नज़र आ रही है, बाकी बहुत ऑप्शंस हैं और भी, लेकिन ये लैब्स जब आप करते जाएंगे, देखें लैब्स आर क्वाइट सिस्टमैटिक। इसमें हर ऑप्शन आप करके देख लेंगे एटलीस्ट एक दफ़ा, तो आप बस इसको गो थ्रू करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। तो these options will give you a perception and a practice of all of these options by using some real data sites. If any one of you have question, you can discuss it. Otherwise, I am going to close the lecture today. And I am unable to conduct the quiz because settings will be done tomorrow. I cannot edit the quiz right now. So I will do implement the quiz tomorrow. If all of you are available tomorrow, if you are not available tomorrow, you can ask Azhar to have any time and let me know at what that time all of you are available for the quiz. और फिर वो 1 से 1 घंटे का सेशन भी अभी करना है बीच में कहीं जा करके, जिसमें हम वो डेटा वेयर हाउस का एक लेक्चर कर लेंगे। अभी हमारे पास 2 लेक्चर्स बचे हुए हैं और इंशाल्लाह कर लेंगे। चलें इसमें कोशिश करेंगे कि वहाँ पे कवर कर लें कुछ। जी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन डिस्कस। सर आप मुझे लैब का बता दें, आप क्या कह रहे हैं कि वो क्या चीज़ें करनी होंगी? देखें ये जो चैप्टर्स हैं ये भी मैंने आपको दिखाया था। ये चैप्टर्स का डेटा कहाँ है मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको। वो मैं ब्राउज़र खोल लूँ अपने इस पे कंप्यूटर पे। This is the location of lab data. So you have to click on this link, then I'm sorry, this is not the appropriate link. Download the data file of all labs
first link. Now my Google Drive have all of these chapters. So you have to click on these chapters. You will get the entire data for these labs. ये 5 labs हैं total, नहीं 4 labs हैं, sorry. ये यहाँ लगी हुई हैं चारों labs. ठीक है, इनमें से पहली वाली लैब और दूसरी वाली लैब में से आज काम हो गया है ये. अब ये चैप्टर आज कराना था डेटा वेयर हाउस का, चैप्टर 2. ये रह गया है, ये नहीं हुआ, लेकिन ये 2 हो गए, अब तकरीबन हो गए. ये लैब 1 लैब 2 ये दोनों हो गए कंप्लीट. सर अभी आपने जो लिंक खोला था, जी जी ये वाला था वो. सर आपने जो लिंक खोला था चैप्टर वाइज दिखा रहा है, डाटा लैब वाइज तो नहीं दिखा रहा. नहीं, वो लैब वाइज तो आपको यहाँ क्लिक करके मिलेगा ना, वो तो डाटा है. ये जो प्रेजेंटेशन जो मैं रन कर रहा हूँ ना, वो ये रही. एक प्रेजेंटेशन में 5 चैप्टर्स बंद हैं, इसमें 5 चैप्टर्स क्लोज हुए हुए हैं लैब 1 में. ये मैं जो अभी रन करता हूँ ना आपके सामने, वो ये वाली होती है. इसमें 5 चैप्टर्स हैं, तो एक लैब, ये पूरी एक लैब है. तो आपने करना कुछ नहीं है, और एक लैब में छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं. ये एक एक 2-2 पेज के चैप्टर्स हैं. ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं. तो आपने सिर्फ और सिर्फ वो डेमोस्ट्रेशन दिए गए हैं इसके अंदर. आप डाटा वहाँ से डाउनलोड करें रेलेवेंट चैप्टर का, और उसको खुद अपने कंप्यूटर पे रन कर लें, और रन करने के बाद .pbix फाइल को मेरे साथ शेयर कर दें आप LMS के ऊपर. बस दैट्स ऑल. नॉट टू डिफिकल्ट टास्क, बट दिस इज द वे टू डू एंड इम्प्लीमेंट ऑल ऑप्शंस. वो आपके पावर BI के सारे रन हो जाएंगे इस तरह से. अच्छा, इसके जो लास्ट हमारा वो होगा, इसमें हम काम कराएंगे आपको लाइव डेटा के ऊपर. पावर BI अभी तो हम डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, पावर BI डेस्कटॉप, लेकिन इसका एक वर्जन है पावर BI ऑनलाइन. So we will work on that. Okay, that's all for today. Thank you very much for to be here in this lecture, and those who are not. अच्छा, अटेंडेंस आप लोग दे दीजिएगा वही चैट बॉक्स में जैसे देते हैं, ताकि जितने अभी 21 पढ़े हैं अभी क्लास में, उनके पास उनका डाटा मेरे पास आ जाए. अच्छा सर, एक बात भी कहनी थी, इसमें इसका कोई भी चांस नहीं है कि हमारा IBA में सेशन हो सके, क्योंकि पावर BI मैं तो घर पे नहीं यूज कर पा रहा, और भी लोगों को प्रॉब्लम थी, तो हो सकता है हम असाइनमेंट्स के लिए IBA जा रहे हो. अच्छा, तो कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहाँ पे ले लें, क्योंकि थोड़ी मुश्किल हो रही है ऑनलाइन क्लासेस में पावर BI समझने में. लाइक आपका कर्सर मिस हो जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम. ठीक है. तो अगर लोग आप है लोग भी बहुत ज्यादा लोग नहीं. हाँ, तो अगर कहते हैं आप लोग, मैं आ जाऊँगा. ठीक है ना. तो अगर आप नेक्स्ट सैटरडे कहते हैं मैं वहाँ आ जाऊँ, तो नेक्स्ट सैटरडे वहाँ आ जाऊँगा मैं, जैसे आप लोग कहें. लेकिन कितने लोग आएंगे, लेकिन मुझे वहाँ पूछना भी पड़ेगा कि वो अलाउ करेंगे नहीं करेंगे. जी जी बिल्कुल ठीक है, हम आपको मिड वीक तक बता देते हैं अगर कोई ऐसा सेटअप हो सके. दूसरा एक और भी ऑप्शन है कि मैं वो जो लैब का कंप्यूटर है ना, ये भी यहाँ घर से बैठ के रन कर सकता हूँ ना. ये मेरी विंडो वहाँ पे चल रही हो क्लासरूम लैब के जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर पर, वो मैं यहाँ से रन कर लूँ. ओके. तो आप लोग अपने कंप्यूटर्स पे वहाँ लैब में बैठ जाएं, और मैं ये साइड बाय साइड वर्किंग करते रहें, मैं यहाँ से आपको गाइड करता रहूँ. ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आ जाऊँ वहाँ पे, कोई ऐसा मसला नहीं है. अगर कम लोग आ रहे हैं और IB अलाउ कर देता है तो आई कैन डू दैट. क्योंकि आपका जो काम है ना वो इम्पोर्टेंट है कि ये आपसे हो जाए ये एक दफ़ा. और ये ऐसे इतना मुश्किल है नहीं. आप थोड़ा सा अभी नए 2 ही लेक्चर हुए हैं, वैसे तो 4 में ख़त्म ही हो जाएगा खैर. लेकिन ये कि जब आप इस पे वर्किंग कर लेंगे 1-2 लैब्स की खुद से, तो यू विल बी कंफर्टेबल इन दैट. इतना मुश्किल नहीं लगेगा आपको. सर क्विज नेक्स्ट वीक ही कर लेते हैं क्लास के बाद. फिर वो 2 हो जाएंगे बेटा, एक डेटा वेयर हाउस पे हो जाएगा, एक इस पे हो जाएगा. कहते हैं लेकिन मेरे ख्याल से 2 अलग अलग क्विज ज़्यादा अच्छे हैं. उसमें आपके पास N-1 के ऑप्शन अच्छा मिल जाता है. तो टोटल 4 क्विज होंगे तो N-1 मिल जाएगा आपको, वरना फिर वो 3 हो जाएंगे तो उनमें से एक N-1 मिलेगा. तो इसलिए ज़्यादा क्विज होना आई थिंक सो इज़ बेटर. मुझे एवरेज बनाने में भी उसमें आसानी होती है और अच्छा ट्रू डेटा आ जाता है उसमें. सर वो BS के भी आखिरी क्विज में बहुत सारे इश्यूज आए थे आपको, वो मैं अकोमोडेट कर दूंगा. देखें वो जो इश्यूज आए ना, अगर वो सिस्टम की वजह से या मेरी वजह से आए हैं, आई विल अकोमोडेट ऑल ऑफ दैट. उसकी आप लोग फिक्र ना करें. वो मैं सारे जितने भी आपके एरर्स आए थे वो
वो एरर में डिटेक्ट करके, मुझे टाइम अभी नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा एंगेजमेंट ज़्यादा है, एक आध वीक में अभी आपके वो जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की कॉपीज़ हैं वो भी चेक नहीं हुई है, तो इंशाल्लाह एक आध वीक में सब सेटल डाउन हो जाएगा ये। क्विज पे मिड ऑफ द वीक होगा फिर? नहीं, क्विज तो मैं देखें आज नहीं कर पाया ना, कल तक कर लूँगा, तो कल मैं पहला क्विज कल ही कंडक्ट कर दूंगा। आप लोग बस टाइम सीआर के थ्रू मुझे कम्युनिकेट कर दें, इफ ऑल एग्रीज टुमारो एट एनी टाइम, तो शाम तक, सुबह में नहीं लेकिन, तो मैं वो कर दूंगा इंशाल्लाह लाइव। So can we do mid of the week? अच्छा, यानी आप ट्यूसडे वेंसडे तक जा रहे हैं? ठीक है जी सर, वेंसडे करवा लें सर। ठीक है, चलें, आप अजहर को बता दें, वो मुझे कम्युनिकेट कर देंगे। अजहर हैं भी क्लास में? सर फर्स्ट क्विज के लिए जो है फर्स्ट लेक्चर की स्लाइड्स पढ़नी है। फर्स्ट लेक्चर की स्लाइड और लैब 1 का मटेरियल कवर कर लें आप। क्विज पावर बीआई बेस्ड था या एमसीक्यू होंगे? एमसीक्यूज हैं और ट्रू फॉल्स हैं, इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। सर ठीक ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।